A very good morning, students. From today onwards, we are going to start our new chapter, our very fresh chapter, that is chapter number 4, Introduction of Business Organization. So, what do you mean by business organization? क्या होता है business organization? As we have already studied that business comprises of both industries and commerce, right? We have studied in our previous chapter. So a business organization is an organization which is engaged in some industrial or commercial activity. Means we can have both the kinds of activities. It can be either industrial or commercial. Now, it depends whether a person is starting a business on its own or in a group. So, a business can be owned and controlled by a single individual also, and also the members, or you can say also in the groups. So, it can be single member also or groups also. Now, what do you mean by business organization? A business organization or business undertaking may be defined as an organization operating under separate ownership. What they have? They have separate ownership. Management and control, their management and control are also different, and carrying on any business activity with independent risk bearing. Means whatever activities they are carrying out, they have to bear risk themselves only. Okay, so let's come to the characteristics of a business organization. The different characteristics of a business organization are: number one is separate identity. It means that every business has their own identity, like they have their different names. For example, if you are starting any business, if you're starting your own factory, you will give your own name or not, you will give your private name or not. So they have their different name and different existence. Whatever assets and liabilities they are having, it will be free from under other बिजनेस लाइक वॉट एवर जो भी एसेट्स आपका है, जो भी लाइबिलिटीज़ आपका है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है. वो आपके किसी और ऑर्गेनाइजेशन से आप ये नहीं कर सकते हो, कंपेयर नहीं कर सकते हो. इट्स अकाउंट आर ऑल्सो सेपरेट, मतलब देर आर डिफरेंट पीपल वर्किंग अंडर योर बिजनेस. सो आपके जो लोग काम कर रहे हैं या आपके जो पीपल इन्वॉल्व है बिजनेस में, उनसे आपका अकाउंट जो होगा वो अलग होगा. अकाउंट वो मतलब जहाँ पे आपके सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज योर इंडिपेंडेंट ओनरशिप. I have told you all right now कि it can be owned by a person, by a single person, or it can be owned in a group. So a business undertaking is owned by a person who contributes its capital. जो पैसा लगा रहा है बिजनेस में, वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है. द ओनर में बी प्राइवेट इंडिविजुअल. इट कैन बी प्राइवेट इंडिविजुअल, मैं आप कोई भी खोल सकती हूँ, या तो गवर्नमेंट भी हो सकता है. Every business undertaking, you know that it has an independent unit of ownership. सबका अलग अलग ownership होता है. Independent management. The form of management of an undertaking depends on its nature and size and legal requirement. But every business undertaking has its own independent management. Means अगर आपका business है तो आप खुद मैनेज करोगे, ना कि कोई और आके आपके बिजनेस को इंटरफेयर करेगा. Is it clear? So each and every business has their own decision making powers, has their own independent management. So that is why it has independent management. Next is your elements of risk. Every business involves risk because हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा. So the risk is borne by the owner himself. कौन बियर करेगा रिस्क? ओनर. एंड सम ऑफ द रिस्क ऑल्सो यू कैन मिनिमाइज इट बाई टेकिंग इंश्योरेंस. आप अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा दे रहे हो, आप अपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा दे रहे हो, तो कुछ रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हो बाई इंश्योरिंग योर प्रोडक्ट्स. लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. Business organization is broadly classified into three types, three broad categories: private sector undertaking,
public sector undertaking and joint sector undertaking. Okay. So what do you mean by private sector undertaking? नाम से ही पता चल रहा है private means एक कोई भी personal individual का होगा. These undertakings are owned, controlled and financed by private businessmen. Government is not participating in these types of organizations. Okay, like for example Tata Steel. Tata Steel क्या है? Private firm है, क्योंकि वो आपका किसका है? किसका है? जमशेदजी नौशरवान जी टाटा का है. तो वो क्या है? आपका प्राइवेट फर्म है, क्योंकि वो कौन है? कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट बिजनेसमैन का है. So what are the main features or characteristics of private sector undertaking? First feature is private ownership and control. Right now only we have studied that a private sector undertaking is owned and controlled by private businessmen, right? It can be owned by one individual or groups of individuals jointly. It depends. If a person alone manages the business, then that is called as sole proprietorship. And if they are combining it, like you can say a group of person may join their own firms, that is called as joint Hindu family business, partnership, joint stock company. We have different forms of business where people come up, meet together and start up their business. Next is profit motive. What is the main motive? Profit, because they are taking risk to earn profit. Third is no state participation. State here means government. Here there is no interference of central government either or the state government. Private finance, who brings up the capital? The owner himself brings the capital. Okay. अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ओनर खुद का पैसा लगाएंगे. अगर जॉइंट स्टॉक फर्म है या कुछ भी फर्म है, पार्टनरशिप है, तो पार्टनर्स कैपिटल लेके आएंगे. अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो वो लोग कैपिटल रेज करते हैं बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स. शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे, जिससे पैसा आता है. Independent management. They have their independent management. The owners of the firms directly manage the business. If it is the partnership, then partners will manage. It depends. Public sector undertakings. So these undertakings, public sector, public का मतलब क्या है? Government. तो public sector undertakings are governed by central government and state government. Okay, who are managing it? Who are operating it? Central government and state government. For example, if we are talking about railways, कौन manage कर रहा है? Government manage कर रहा है. State ownership. These public sector undertakings are completely managed by the government or the public authority. For example, I have given you all railways, or you can say RBI. ये सब कौन manage करता है? Government manage करता है. Second is government control. The ultimate control is in the hands of the government. No other personal or private individuals can come and control it. Service motive. They basically don't work for profit motive. Why they are operating? To provide service to the society for their social benefits. State financing. Who is putting capital in the business? Government. Because it is the government business. So government themselves provide loans from time to time, and also you can say ki government also provide capital. So these happens. Bureaucratic management. Bureaucrats, what do you mean by bureaucrats? Bureaucrats are the people appointed by the government. Like आप बोल सकते हो government officials होते हैं. Okay. The management of public sector undertakings is bureaucratic in the sense that whatever rules and regulations government has prescribed, it has to be followed. And who governs this? Government officials. Public accountability. These public sector undertakings are answerable. Accountability का मतलब क्या होता है? Answerable to the public. कि उनका परफॉर्मेंस ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा रिजल्ट है. दैट इज़ भाई आप जानते हो कि बजट वगैरह प्रिपेयर होता है कि बताते हैं कि हाँ ये है, वो है, इतना खर्चा हुआ, वो हुआ, क्योंकि दे आर अकाउंटेबल टू दी पीपल. ओके, सो दे आर आंसरेबल टू दी पीपल. प्राइवेट एंटरप्राइजेज में ऐसा नहीं होता है. यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी. नेक्स्ट इज योर जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स. Joint sector, there is a difference between joint stock company and joint sector undertakings. Please,
डू नॉट कन्फ्यूज़, जॉइंट सेक्टर और जॉइंट स्टॉक अलग होता है. जॉइंट स्टॉक आपका प्राइवेट ओनरशिप का ही पार्ट है, बट जॉइंट सेक्टर इज समथिंग एल्स. तो जॉइंट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग्स वेयर द ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज शेयर्ड by the government, private entrepreneurs and public also. Okay, government acquires 26%, private businessman acquires 25% and public कितने हैं 49%. जो शेयर कैपिटल होता है गवर्नमेंट, आप जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग का जो शेयर कैपिटल होता है ये इस तरीके से होता है. 26% किसका शेयर्स है, गवर्नमेंट का है. 25% किसका शेयर्स है, आपका बिजनेसमैन का है, प्राइवेट बिजनेसमैन का है. और 49% किसका है, पब्लिक का है. नो सिंगल इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन होल्ड मोर देन 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 25% शेयर से ज़्यादा एक्वायर नहीं कर सकता है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से. इफ़ फॉरेन पार्टिसिपेशन ना देर, मतलब कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो आपकी कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपकी कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट का 20%, इंडियन पीपल का या इंडियन बिजनेसमैन का 20%, ओके, फॉरेन इन्वेस्टर्स का 20% और जो पब्लिक है उनका 35%. फॉर एग्जांपल आपका कोचिन में है रेफिनरीज और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स, ये सब आपका जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स है. फीचर्स क्या है, पहला है मिक्स्ड ओनरशिप. मिक्स्ड ओनरशिप क्यों है, बिकॉज you are seeing here government, private businessmen, even people are investing in this business. Combined management, जो शेयर्स खरीदेगा वो मैनेज करेगा. तो जितना जितना पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट जितना शेयर्स खरीद रहा है गवर्नमेंट का उतना पार्टिसिपेशन होगा. पब्लिक जितना शेयर्स खरीद रहे हैं पब्लिक का उतना पार्टिसिपेशन होगा. आप इंडियन बिजनेसमैन या नॉर्मल फॉरेन इन्वेस्टर्स जितना खरीद रहे हैं उनका उतना पार्टिसिपेशन होगा. Share capital, we have already discussed, 26% governor in case of Indian company. Your Indian investment, 26% is government, 25% is businessman, private businessman, and 49% is the public. So you have to study the difference between the private, public and joint sector undertakings. That's all for today. We'll continue it in our next class. Thank you.